Hello people, I am Jaby Koay, joined by Achara KIRK. What's up? We're looking at Akash Gupta's Sarojini Nagar. Excuse me, brother. Stand-up comedy by Akash Gupta. Thank you, Akash Gupta, for allowing us to react to this. Very much appreciated. If you haven't already, y'all, subscribe to his channel. There's a link in the description below with the original video that we're about to watch. If you enjoy his comedy, make sure to click on that link, give the original an upvote, and subscribe to his channel as well. Yeah. And why are you looking at me, Achara? Oh. Well, you're making me embarrassed. I'm all like shy. because you're messing up. I gotta look at you, so you get it right. That doesn't help. Stop. बट दिल्ली की ना एक जगह है जो मेरी फेवरेट जगह है, ठीक है, उसका नाम है सरोजनी नगर. Is that the market? इट्स अ फ्ली मार्केट, जैसे Yeah. आपके यहाँ ही है ना लिंकिंग रोड, हिल रोड. फ्ली मार्केट समझते हो आप, जहाँ वो चल रहा था 150 लूट लो. आराम से यार, आराम से. बहन जी गिर गया क्या? बाओ नहीं, बहन जी की चलते चलते पड़ जाती. क्या गिर गया? पूरा तो बता. नॉटी. ये मार्केट पता है क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ ना बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं. पर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ इतना प्यार मिलता है. आपको कोई आइडिया नहीं है यार. जितने लोगों को लगता है ना कि दिल्ली बहुत रूड है, बहुत अग्रेसिव है, एक बार सरोजनी चाहिए. रैंडम लौंडे, रैंडम आपको इधर प्यार प्यार से बुला रहते हैं. एक्सक्यूज मी ब्रदर, ब्रदर टी शर्ट, एक्सक्यूज मी सिस्टर टॉप, एक्सक्यूज मी. ना इतने प्यार से सगे ब्रदर ने नहीं बुलाया कभी घर पे. और ये नॉर्मल टोन नहीं होते इनकी. ये पता है, ये 5 फुट के लौंडे होते हैं, इनके 3 फुट के स्पाइक्स होते हैं. इनके शरीर पे कहीं भी पियर्सिंग हो रखी होती है. जीप पे झुमका है, मतलब एक स्कार. आप शक्ल देख के बता सकते हो कुछ तो ये रात को बोरियों में लाश वाश पैक करता है. मतलब कुछ है. इसका मेन काम ये नहीं है. और आप क्या आते हैं? एक्सक्यूज मी ब्रदर, ब्रदर इधर जरा मेरे मोटा. मतलब ये मीठा सुर आपके मुंह से निकल रहा है यार. इन लॉन्डो में ना कुछ कन्विंसिंग पावर होती है कि आप इनके मुंह पे ना पहली बारी में मना ही नहीं कर सकते. एक बार मैं सरोजनी में जा रहा था, मेरी पीठ पे एक हाथ आ गया. अरे ब्रदर सब ठीक है? Very aggressive. मैं 2-3 देख भी ली, फिर मुझे रियलाइज हुआ साले मेरे को लेनी नहीं है यार. फिर वश में कर लेते हैं. ये कौन से MBA स्कूल से पढ़ के आए हैं? ये मार्केटिंग सेलिंग टेक्निक कहाँ सिखाई जा रही है यार? क्योंकि बहुत अमेजिंग तरीके होते हैं इनके यार फंसाने के. एक बार हम 3 दोस्त जा रहे थे, फिर से वो आवाज आई, एक्सक्यूज मी ब्रदर. मैं कहा हाँ ब्रदर, आपने जीन्स बोली थी वो आ गई है. नहीं यार मैंने नहीं बोली थी. ओ ब्रदर आपने नहीं बोली थी. ओके पर ब्रदर आ गई तो देख लेते. चले ब्रदर जीन्स Just takes him along. ले गया मेरे को. वहां एक बंदा जीन्स खोल के उड़ा, मेरी टांगे डाल दी उसको उन्होंने यार. यहाँ तक लेके घूम रहा हूँ मैं जीन्स. अब तो खरीदनी पड़ेगी ना. प्लानिंग देख रहे हो आप? एक बंदा यहाँ ना बेल्ट बेच रहा था, ठीक है भाई. वो भी एक अलग कैरेक्टर होता है यार. देखो नॉर्मल बेल्ट खरीदने का क्या तरीका होता है कि आप शॉप पे या शोरूम में जाके ऐसे दीवार पे या रैक्स पे बेल्ट होती है, आप चूज करते हो. ये आदमी अपनी गर्दन पे 70 बेल्ट पहन के घूम रहा है यार. बेल्ट पहन के घूम रहा है, ऐसे बक्कल यहाँ ढक रहे हैं सारे इसके. और ना एक इसके हाथ में लिपटी होती है ऐसे. और ये ऐसे खड़ा रहता है, कोई एक्सप्रेशन नहीं, एकदम हार्मलेस बंदा लगता है आपको कि. पर जैसे ही तुम इसके सामने से निकलो ना, ये बेल्ट खोल के तुम्हारे पैरों के आगे मारता है. What? क्या? क्या? ब्रदर बेल्ट. बेल्ट ब्रदर. गांड मिलेगी आपके पास, क्योंकि ये वाली फाड़ दिया हमने. ये जो आपने मेरे सामने मनूवर्स किए ना, ये मेरी फट गई है. तो बेल्ट नहीं, स्पेयर गांड लगा दीजिए आप. इसका मैं क्या करूं यार? इसको बेच देते. एक्सक्यूज मी ब्रदर गांड, फटी गांड ब्रदर. यार ये कौन सा तरीका बेल्ट बेचने का? हाँ ये कौन इंप्रेस हो रहा है इससे?
कि कौन से कस्टमर हैं जो मार्केट में आके कह रहे हैं भाई साहब एक बेल्ट दिखाइए, उसकी फिटिंग उसकी हिटिंग बढ़िया होनी चाहिए। मैंने उससे जाके पूछा, मैं कहा भैया ये बेल्ट कमर पे कैसी लगेगी? जोर से लाल कर देगी। पीछे मुड़ो डेमो देता, नहीं मैं नाड़ा पहनता हूँ, मैं तो ऐसे पूछ रहा था आपसे। भाई इस बंदे से ना बार्गेनिंग मत करना कभी। इसने 250 बोला, चुपचाप 250 की ले लो। इसको मत बोला क्या भैया 200 लगा लो ना यार। अरे आप वर्थ देखे ना, क्वालिटी। अरे खून निकाल जा रहे है, वर्थ है, जेन्युइन लेदर है भाई साहब, 50 का वर्थ है ये तो। कौन है इसकी टारगेट ऑडियंस? कोई तो चीज की भी है ना, क्योंकि इतने सालों से धंधा चल रहा है इसका। मुझे लगता है इसकी टारगेट ऑडियंस है वायलेंट फादर्स। हरामी बाप नहीं होते जो, वो क्लाइंट है इसका। वो मार्केट में आते खुश, सर आगे सर आइए इतने दिन बाद आए। सर देखिए नया माल आया है, ये यूनिट टेस्ट वाइवा वगैरह के लिए। ये सर मोटा बक्कल है, ये 10-12 के बोर्ड्स के लिए। ये सब जनरल फन बेल्ट्स, जनरल मीटिंग्स। शिमला घूमने जाएंगे हैं, नाइट आउटफिट है, जनरल फन बेल्ट सर। सर ये हमारा हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है सर। इधर आइए आप देखिए, ये अगर आपके बच्चे कॉलेज के बाद कह रहे हैं वो पैशन फॉलो करेंगे, डांस सिंगर ये सब बनेंगे ना, एनजीओ खोलेंगे हैं सर। ये एमबीए कराती है सर। इसको हम बोलते हैं कैट बेल्ट। आप उसकी पीठ पे मारेंगे, उसके मुंह से निकलेगा कैट, ठीक है सर। 2-3 मारेंगे एंड मैक्स दैट, सारे पेपर देगा सर। और सर दोनों तरफ से मारने, वरना क्या रिटर्न क्लियर हो जाएगा, इंटरव्यू रह जाएगा। फिर आप आके हमें बोलेंगे। और सर वो साइड वाली दुकान से लेना, सोनू की दुकान से, उसकी दुकान से लो ना, प्राइवेट कॉलेज निकलते हैं। एमिटी, शारदा, वर्ल्ड इज हियर, वेयर आर यू, वी आर इन गुड कॉलेजेस। आप हमारी बेल्ट में, जैसे आया अहमदाबाद निकलवाएंगे हम। फर्स्ट अटेम्प्ट, ये देखिए सर, टॉपर्स की फोटो देखिए आप। वो नहीं होती कोचिंग सेंटर के बाद टॉपर्स की फोटो लगी होती है, इसने वही फोटो नंगी पीठों के साथ लगवा रखी है। सर देखिए राहुल, पीठ देखिए कितनी लाल है। 25 लाख का पैकेज सर, हमारी बेल्ट है सर। मैं खुद आई एम ड्रॉप आउट हूँ सर। बहुत जबरदस्त लौंडे होते हैं यार ये। उस दिन मैं जा रहा था सरोजनी में, एक बंदा मेरे पास आया, कह रहा ब्रदर गॉगल्स। भाई उसने पहना दी, मुझे छुए बिना। इम्प्रेस ही हो गया। मैं कहा तू प्रैक्टिस कहाँ कर रहा है? क्योंकि ऐसा भी नहीं कि मैं खड़ा हूँ किसने गॉगल्स पहना दिए, मैं चल रहा हूँ सडनली गॉगल्स आ गए हैं। यहाँ से रेबैन लटक रहा है, सब कुछ काला काला दिख रहा है मुझे। मैं कहा भाई जादू कर रहे हैं क्या? जरा कबूतर भी निकालिए यार। मैं खुद का चश्मा खुद को छुए बिना नहीं पहना पाता हूँ। ये बंदा 150 ब्रदर। पर अब ये चीज हो गई कि ना, ये इस मार्केट में ना आपसे बिना पूछे आप चीजें ट्राई व्राई कर देते हैं। वो इंसिस्ट करना बंद कर दिया, एक्सक्यूज मी, वो सब पहले बड़ा मजा आता था। एक्सक्यूज मी सिस्टर, अरे जीजू भी आए हैं, जीजू जीन, कपल, एक्सक्यूज मी लवली कपल। सब मजे लेते रहते थे यार ये लोग। अब वही बिना मुझे प्रोडक्ट ट्राई कर रहे हैं। उस दिन किसी ने ना मुझे हेड मसाज दे दी। वो नहीं तो एक हेड मसाजर है, वो ऐसे लोहे की डंडियां ऐसे फैल जाती हैं सर पे। Not cool. यार मैं चल रहा हूं मार्केट में, पीछे से दूर। Not cool. क्या एंजॉय किया ना? हाँ थोड़ा सा। 30 रुपीज, 30 रुपए देने पड़े यार। उसको देख के ना एक बंदा मेरी पीठ पे खुजली करने लगता है। वो एक डंडी आती है, उसके आगे कार्टून के 2 दांत ऐसे होते हैं, देखा आपने? वो बुड्ढे आड़ के खुजली नहीं करते थे। पीछे पड़ गया, भैया ले लो। कहाँ भाग रहे हैं? ले लो भैया। भैया 6 किलोमीटर हो गए, अब तो ले लो। आप सोचो कितना वियर्ड हो जाएगा सारे दुकानदार ऐसी अथॉरिटी लेने कि आपसे पूछे बिना आप पे प्रोडक्ट ट्राई ही हो जाता है। तुम मार्केट में घूम रहे, बंदा आएगा, सर ना ट्रिमर है, ट्राई करेंगे? ट्राई गंजा कर दिया बेंच एक तरह से। ये तो पहले पूछना होता है, ये लेकर कहाँ घूमूं मैं?
या तो यहाँ से भी कर बैकअप बना दे मुझे नहीं जीन्स है ब्रदर की पैंट उतारो बहुत बढ़िया अरे कच्चा भी नहीं पहना पॉपी शेन ब्रदर Well, I don't know what that is. अरे मार्केट में नंगे आ गए हैं यार ची 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 अरे भाई नंगे से ज्यादा कॉन्डम ट्राई करेंगे ये देखिए Ew! 10 साल से बेच रहा हूँ ब्रदर ऐसी फिटिंग ब्रदर कॉन्डम I cannot wait for this guy to have kids and tell stories about his kids. Oh my god. Because he is so physical Yeah. in the way that he performs. The first thought that came to my brain was like a younger Kevin Hart. I mean, Kevin Hart is still pretty physical in his performance, but I really, really like Kevin Hart's old performances, like particularly from his 2 first specials that were on Netflix. Right. And like I got a little bit reminded of that, of those specials, just in the way he performs and his physicality and whatnot. I personally really like comedians who are quite physical in such a way to really paint the picture of the situation that they're in. Like he really makes you feel like you're there. Well, yeah, it's You know? super clear. And I don't know if you remember, we went there and it was just the craziest market. It was after we went to the Dilly Hut and then Akanksha took us to Sarojini. Oh yeah, I remember. And nuts. it was mayhem, and the way Yeah. he's describing it, I'm like, yes, 100%, it was exactly like that. And like, I am used to going to these types of markets, but Sarojini was like on a whole other level to anything that I've ever experienced in my life because it was just so aggressive. Well, it was also packed. It was Yeah. packed full of people and the vendors are all like in your face, like, oh, sister, glasses and blah. I'm like, oh my god, and I was literally like, we need to get out of here because I'm feeling a little bit overwhelmed. I guess I didn't really experience that firsthand. I guess you experienced it more than I did because I wasn't really trying to buy anything. I was just videotaping the experience, trying to fight through the crowd. They clearly knew their mark. Okay, gotcha. Which was Yeah. me. Yes. Because You got a big sucker written on your I'm forehead. like, sucker, I Yeah. will buy everything. Yeah. Just put it in my face and I'll feel bad. And then I'll be like, I'll give you 300 rupees to leave me alone. Yeah. Like, please. It's interesting to me what people can get away with regards to aggressive behavior, so long as they're not doing anything illegal. It's like you can really, really push the boundaries of something as long as you're not hurting anybody. Yeah. You can really be aggressive and it's totally legal, even though it's borderline harassment. Yeah. You know, this is something that is not limited to, Sarojini market. Like this is, how do you say it? Is it Sarojini? Yeah, I said it correctly, right? Yes. Sort of. Anyway, like this is something that you experience with salespeople over here. I experienced this in Mexico with, people selling at markets and stuff like that. But in India especially, like, wow, like there are some really aggressive tactics that I've seen used in the streets, where in the Goa market, where that girl is trying to get you to buy stuff, like where they put a flower on your purse and like, come over here, I need your help, I need your help, come, my sister needs your help. Oh my god. Like, why does your sister need our help of all people? There's a lot of people here. Why does she need her help? Yeah. Seems sus. I really enjoyed his performance, like you said, because the characters were so clear. And then the thing that kind of, really sealed it for me, because he started off and he was kind of portraying all these characters, and if you've been there or you can imagine it, you're like, oh yeah, I'm definitely seeing this picture. Right. And then he flips it around with the belt dude and turns it into this whole joke about, beating your kids and getting into good schools and stuff. And I was like, wow, that is really smart. Like, he just kind of took it on this whole other direction, which was also really, really funny. And I guess more relatable for the audience than maybe to us. My favorite part of it was the evolution of things, because it used to be like, hey, brother, and it's just like this very annoying sound. And then it eventually evolved out of manners to just like doing shit to you. Yeah. Like he's walking by and the guy just does the thing to his head. But it's true, that does happen. That's the thing. It's just kind of disconcerting. But it was funny as well, because he was all like, the way he was like, I've been following you for 6 kilometers, brother. Yeah, exactly. It's a hustle. At the end of the day, it's all a hustle. It's like everyone's just trying to get paid and survive at the end of the day. Well, it's funny what he said too about, the kids who are selling stuff at the market, and that, they're so polite to you, like, hey, brother, hey, sister. And then you look at their face and they've got a scar on their face, and he goes, oh yeah, you know that this isn't their main gig.
Like, Right. they're out there stuffing bodies into bags. I was like, damn, that's dark, but What- also hilarious. He did a good job of describing the kid though. He really painted a picture of kid's 5 foot tall, but 3 feet tall, spiky hair and all that stuff. Yeah, I could see it. I was like, yes, I saw that kid. Yeah. I saw that kid. I know exactly the type of kid that you're talking about. I'm confused because I don't like the aggressive tactics that have been thrown at me around the world, mind you. Like whether it's India, Mexico, or the States, like aggressive tactics just kind of rub me the wrong way. But I also, at the same time, kind of admire it because I don't feel comfortable to do that to anybody, to just aggressively go at someone but also they're coming from a different place of they're trying to survive and they are gonna do whatever they gotta do to make sure they get paid at the end of the day. Yeah. And so they're gonna do some weird, tricky shit that maybe you're not comfortable doing, but they need to put food in their stomach. And so they're gonna do it. You know well, what I'm like saying? that whole thing where it's like, they make it sound like you've been wanting this thing. You know, like, That was brother, great. your jeans are Your here. jeans have And he's arrived. like, I didn't ask for any what? Yeah. But, I mean, he was talking about how they're very, the tactics they use are very smart. They just kind of whisk you away. That happened with us so many times. Yeah. Even that one instance where they tried to sell us black money at the airport after we it's arrived. They just took our bags and started walking. I'm like, Yeah. yo. They're already that's mine. meters ahead of us, and we're Right. just trying to catch up. Give me back my stuff. Yeah. But I think the thing that was really good as well was just his facial expressions, but more importantly, the really deadpan look that Right. he was doing all the time, where he would just kind of look and be like, and just wait. I think there's a lot of confidence in your joke if you tell it and then you just wait because you know it's funny. What you're saying is true. He does have good pregnant pauses in there, but it's also fast. He's physical and he's fast. It's he's such high energy, but it's not off-putting. That's the interesting thing. He has a perfect balance there because he moves quick and you got to keep up with it, but he also allows room for those laughs, for those pauses. Yeah, And he doesn't feel manic. Right. Yeah. Yeah, I like it a lot. It's very well balanced.